Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our next session titled The White Stripe on the National Flag. The speakers for this session are Shaheen Atikur Rahman, Olivier Truk, Rima Abbasi, Sono Kangharani, and John O'Brien. The moderator for the session is Nazish Brohi. Please switch off your mobile phones or put them on silence mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Nazish Brohi, our moderator, is an independent researcher and development consultant with 15 years of experience in the social sector. She has worked in Pakistan, Afghanistan, and Iraq, and has been a Charles Wallace Fellow at the University of Oxford. Her current research interests are violence and conflict, democratization and the state, gender, social change, and the nature of the political. She writes for Dawn newspaper and is an activist with the Women's Action Forum. Nazish? Thank you. Thank you. Is this working? Okay, thank you all for being here and welcome. So I'll quickly introduce the participants here, the panelists. Sonu Kangrani is a rural development professional and social entrepreneur with over 28 years of experience in designing, implementing, and transforming development projects. He's been an active advocate for the Dalit rights movements in South Asia, and he has also been awarded the Tamgha Imtiaz by the government of Pakistan. We also have with us, I'm fumbling my way through this, Shaheen Atikur Rahman, who was, as many of us know, formerly the Minister for Social Welfare, Women's Development, and Baitul Mal. Shaheen Atikur Rahman is a development worker with 23 years of experience in the fields of literacy, education, gender, and women's empowerment. She is presently the Vice Chairperson of Bunyad Literacy Community Council, and her efforts have achieved recognition at national and international levels. She's been awarded the Comenius Medals, UNESCO Paris, for her innovative work in literacy, and King Sejong, I could have butchered the pronunciation, Literacy Prize, UNESCO Paris 2002, and the Eazaz-e Fazilat Presidential Awards in the field of education, literacy, and development. So that's Shaheen for us. Who have I now left out? Rima, who's here on my immediate left. She's a Karachi-based journalist. She has authored the book Historic Temples in Pakistan, A Call to Conscience. And Rima was the recipient of the Gender in Journalism Award 2003 from UNESCO for the most gender-sensitive reporting. Many of you must have seen that fantastic book she's had out recently. In September 2014, she received the Rajiv Gandhi Award for Literary Personality of the Year. Ye to mujhe bhi nahi pata tha. That's exciting. All right. And then we have with us Olivier Truk, who is a French journalist, author, and novelist. His journalistic career began in '86. And based in Stockholm in Sweden, he's the Nordic and Baltic regional correspondent for Le Monde. Truk, who has previously worked with the French Daily Liberation, writes articles covering subjects from politics to economy and social issues. He has also produced television documentaries, and his work includes several 26-minute and 52-minute documentaries that have been broadcast in France. His first published novel is 40 Days Without Shadow. His second novel, The Wolf Street, is not translated yet and was published in French in September 2014. John O'Brien, on my immediate right, is a Catholic priest who was born in Ireland and first came to Pakistan in '77. He now lives and works in Sindh. He has been involved in a variety of social, educational and development programs amongst the minority communities, including housing and health projects and adult education programs. He is the author of several books, including The Unconquered People, The Liberation Journey of an Oppressed Caste. So have I covered my entire panel? I have. All right then. So welcome to these esteemed panelists. I'm going to bumble my way somehow through this because apart from Rima, I actually haven't heard back from the panelists about what they want to speak about. But because I've kind of worked with women a lot in the past, I have kind of understood that silence is often a form of resistance.
So I'm assuming this resistance is not just to the moderator, but to the notion of moderation. So, and I'll ask them to like kind of shape how they want to let it shape themselves. The session today that we're talking about is the flag, the white stripe on the Pakistan flag, which, as we all know, represents minorities. And another interesting thing about the flag that I just want to kind of frame this debate with is something I found out last year, and it excited me to no end. And that's not just the stripe on the flag, but the other part of the flag, the crescent and the star. And I, at one point, looked up what the crescent and the star meant, because we don't know what the white stripe means. And it's interesting that the Pakistan state kind of appropriated it from the flag of the Ottoman Empire. As a symbol of continuity of Muslim power, and theirs is red with the white flag, with the white crescent and the white star. So we took it from them, but it was interesting to then look into where did they take it from. So the Ottoman Empire took it from the flag of Constantinople. And on the flag of Constantinople, the star represented Virgin Mary, and the crescent represented the Greek goddess Artemis. So we have on our flag two goddesses who are being represented. Unconsciously, probably, but at some level, I guess, there is this genetic syncretism and pluralism that's embedded, whether we choose to kind of acknowledge it consciously or not. So I guess there's so much of genes that you can fight. So starting from that point, I'll take it on to my panelists. Maybe I'm not really sure what order we want to do it in. Maybe we can start with Olivier Troup and just do it in the way that we're sitting. Would you like to start? To start with, excuse me, to start with what? Whatever you want to say, because I didn't hear from you about what you wanted to say. Some statements. So wow. I don't really know what to throw out at you. Some statement. I mean, I don't have any statement to say, but I mean, the reason why I'm here, I guess, is because my novel, 40 Days Without Shadow, is about the native population of Northern Europe. They are called the Sami people, or the Lapps. I mean, living in the Nordic countries, everyone knows that the Nordic countries are the best countries in the world, of course. They are doing so well for human rights, for human rights, for minorities all over the world, for the Indians in Amazon, and so on and so on. But they have apparently forgotten that they have their own native population in their own countries. And as a journalist, I've been working for 20 years now in the Nordic countries, traveling a lot all around these countries, around the Arctic circles where the Sami people are living. Some of them are still working as reindeer herders. That's a very traditional way of working according to their culture. And they have many problems. They are facing a lot of conflicts with mining industries, with any kind of industries, and the national states, I mean, in a few words, they don't care about them. So I guess we can talk about them after, because we find this same kind of situation in other countries. And I think that's a particularly kind of important juxtaposition, because often we kind of dwell on, our own neuroses without realizing that it's part of global trends, global patterns, and maybe to some extent exclusion of minorities seems to be almost coded within the notion of the nation state itself. So it's interesting to see how it plays out in other contexts. In Pakistan in particular, as we know, that this country was actually founded on the notion of concern for minorities and the concern over the perception of hegemonic majority. And that was the basis for the articulation of a need of another country to represent minorities. And then what happened to us, I'm not sure. Did the abyss stare back into us? So I'll go now to Sonu Saab and ask him what he'd like to kind of say on this or any other account. थैंक यू जी। देखें, मैं अगर उर्दू में बात करूं तो बिल्कुल मेरा जो यहाँ पे मेरे ख्याल में वाइट स्ट्रिप ऑन द फ्लैग, नेशनल फ्लैग, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कई पॉइंट हवाले से। सबसे पहले तो उनकी कंट्रीब्यूशन देखनी चाहिए कि ये जो नॉन मुस्लिम्स लोग यहाँ पे रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ट्रेड से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, पॉलिटिक्स से लेके,
लेबर तक क्या रही है, और लेबर तक तो बहुत ही ज़्यादा रही है, आज भी है। तो ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एक सवाल ये उठता है कि क्या इस कंट्रीब्यूशन को कभी इस मुल्क में रिकग्नाइज़ किया गया है किसी भी फोरम पे? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक इस पे भी एक चीज़ बात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो बड़ी रिसेंट है कि क्या हम बात कर पाते हैं, हमें ये करेज है एज ए नेशन कि जो वाइट स्ट्रिप है नेशनल फ्लैग पे, उस पर हम बात करें, उसके मसाइल्स पे बात करें, उनके प्रॉब्लम्स पे बात करें, उनके साथ अगर कोई एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं तो उसके मतलब कोई बात होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है। मेरा अपना व्यू इस पे बड़ा एक कंजर्वेटिव है कि इस पे आर्ग्यूमेंट होना काफ़ी रुक गया है या नहीं होता। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी नॉन मुस्लिम सोसाइटी है उसमें एक खुद से बहुत बड़ा एक ब्रोकन पीसेस हैं, को कहीं है को कहीं है, वो एक ब्रोकन पीसेस को किसी कंपार्टमेंटलाइज किया गया है, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि उन कंपार्टमेंटलाइज करने में स्टेट का कितना हाथ है या स्टेट के लोगों का कितना हाथ है, या वो खुद से हो गए हैं, वो आपस में जुड़ना नहीं चाहते, उनके लिए कोई एक सा आवाज़ नहीं बन सकता। ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में क्योंकि ये हमने इनहेरिट किया है, स्प्लिट हुआ है फ्रॉम द ग्रेट इंडिया, तो यहाँ पे एक कास्ट सिस्टम जो इस खित्ते में पाया जाता है, उस कास्ट सिस्टम में ख़ास तौर पे हिंदू और उनमें दलित जो हैं उनको बड़ा मुतासिर किया है, उनकी ग्रोथ को, उनके वॉइसेस को, उनकी सारी कंट्रीब्यूशन को बड़ा ये समझें कि दबा के रखा हुआ है पिछले कई सालों में। और जाहिर है मैं एक बात ज़रूर इसमें करना चाहता हूँ कि देखें, इस पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो डेटा कहती है कि 15% नॉन मुस्लिम्स रहा करते थे इस मुल्क में, जिसमें से आधे में एक आधा हिस्सा अलग हो गया, और वो अभी इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि 7% के लोग, 7% के करीब लोग उनके मुल्क में अभी भी रहते हैं। हमारे मुल्क में कोई 3% से ज़्यादा पिछले 3 सेंसस में बढ़ नहीं रहे। तो क्या मेरा हमेशा ये सवाल होता है हमारे अपने दोस्तों से, क्या उनकी मदर्स ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिए हैं? वेयर है दे हैव गॉन? वो लोग कहाँ गए? उसकी सेंसस में डेविएशन डिफरेंसेस क्यों नहीं आ रहा? उसकी सेंसस में तादाद, चलो परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं बढ़ना चाहिए, या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनकी तादाद क्यों नहीं बढ़ रही? तो यहाँ पे भी एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या कहीं स्टेट ने उसको इस तरह के फिगर को कंट्रोल करके तो नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उसमें से 80% लेबर तलके से, दलित कम्युनिटी पर्टिकुलरली इन हिंदूज़ में 80 से 90% उन लोगों का है जो हारी हैं, जो बॉन्डेड हैं, जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, जो ब्रिक किलन में इन्वॉल्व हैं। इस मुल्क में कभी आपने सुना कि उनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी है, कोई पैकेज है, कोई उनके लिए बात की गई है? हत्ता कि जो 1956 का शेड्यूल कास्ट का जो बेनिफिट है जिसमें 6% कोटा की जिक्र किया गया है, उसको भी कन्वर्ट करके मिनारिटी में तब्दील किया जा रहा है। इसी मुल्क में 34 के करीब हमारे मुल्क में लेजिस्लेटिव हैं असेंबली में जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ से आते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो इन कम्युनिटीज़ को नुमाइंदगी करते हैं। समहाउ दे आर आल्सो एम्प्लॉयड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। वो कहीं पे भी इलेक्टोरल सिस्टम से नहीं आते। हम जब यहाँ पे कोई इशू होता है, जब मैं यहाँ पे इशू होता है, आखिरी बात करके मैं आई विल, अब आप देखें यहाँ पे कसूर में एक इशू होता है जिसमें एक कपल को जला दिया जाता है जिंदा। किसी भी हमारे मुल्क में ज़रूर प्रोटेस्ट हुए होंगे आइसोलेटेड प्लेस पे, किसी ने अपना तमगा वापस नहीं किया, किसी ने अपना अवार्ड को प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने ये बात नहीं कही इस मुल्क में कि ये ज़्यादती हुई है, लिहाजा मैं ये जो सरकार की रिकग्निशन है इससे मैं विदड्रा करता हूँ या करती हूँ। जबकि उसके मुकाबले में हमारे नेबरहुड में कई सारे लोग स्ट्रीट पे आए, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने अपना वॉइस रिकॉर्ड कराया, कई सारे उन्होंने अपने जो भी अवार्ड्स उनको सरकार की तरफ से मिले थे वापस किए। तो ये बहुत बड़ा एक तजाद है कि यहाँ इस मुल्क में हम सब लोग कितनी इम्पॉर्टेंस दें उन लोगों की जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वाइट पार्ट में। उन लोगों की रिकग्निशन कहाँ है? उन लोगों ने जो ये काम किया है, इस पूरे मुल्क को सफाई का एक निज़ाम दिया है, इस पूरे मुल्क के लिए जो भी काम किया है उसकी रिकग्निशन क्यों नहीं हो पा रही? पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों नहीं हो पा रही? इकोनॉमिक सिस्टम में क्यों नहीं हो पा रही?
उनके सोशल सिस्टम में एक्सक्लूशन क्यों है, ये वो सारे सवाल हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि मेरे दूसरे कलीग्स भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपके कोई सवाल होंगे तो वो भी। थैंक यू। थैंक यू जी, आपकी बहुत अहम कंट्रीब्यूशंस थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसस के बारे में आपने बात की, हमने सुना है जी अगले साल तक एक नया सेंसस हो जाएगा पाकिस्तान में, मेरे ख्याल कितने 18 साल से नहीं हुआ है, वे ओवर ड्यू। तो जी, well 98 was the last census, तो उसके बाद आई थिंक मे बी दैट विल बी अ स्पेस टू एड्रेस दिस। जहाँ तक आपने अवार्ड्स रिटर्न करने की बात की, शायद हमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ रियासत का रोल रहा है, क्योंकि आई थिंक अगर हम रियासत ने दिए हुए तमगे वापस करें तो उस पॉइंट पे करना चाहिए जहाँ आप रियासत को डायरेक्टली काइंड ऑफ इंडाइट कर सकते हैं, जो बहुत सारे उसके भी मौके हैं। इन्होंने जो बात की माइनॉरिटीज़ के बारे में कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, ये बात सही है, हमने शायद इतना एक्नॉलेज नहीं किया कितना कंट्रीब्यूशन है, मगर मुझे इस बात पे थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है कि अगर हम कहें कि अच्छा नहीं कंट्रीब्यूट किया तो क्या हुआ, अगर नहीं भी किया, क्योंकि अगर आप हैसियत शहरी हैं तो उस उनकी जो कंट्रीब्यूशन हो ना हो, हम बाकियों से तो नहीं पूछते ना जी आप आम शहरी आप लोग ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मेरे ख्याल बुनियाद और द फैक्ट कि माइनॉरिटीज़ को बार बार प्रूव करना पड़ता है उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, आई थिंक दैट इट सेल्फ सेज अ लॉट कि क्यों इस पोजीशन पे उन्हें आना पड़ता है। इस शहर में हमें पता है कराची का शहर जो है वो बनाया ही माइनॉरिटीज़ ने, इसकी जितनी भी ट्रेडिशंस, इसका आर्किटेक्चर जो है वो माइनॉरिटीज़, चाहे वो पारसी कम्युनिटीज़ हों, चाहे वो हिंदू हों, जो भी ईसाई हों, उन सब ने मिल के इस शहर को बनाया है। और इसी शहर में मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह बात थी, सितंबर 2002 में इस शहर में बीच दोपहर में दिन दहाड़े इदारा अमन इंसाफ के अंदर जाके 7 क्रिश्चियंस वर शॉट डेड। दोज वर द अर्ली डेज़ ऑफ द वॉर ऑन टेरर, शायद हमें उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था ये बात कितनी बढ़ जाएगी और इस मुल्क का टेररिज्म के हवाले से होगा क्या, मगर आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट उस वक्त कुछ नहीं हुआ था, उस शाम को अगले 3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ था। मगर आई गेस एक वी मूव्ड ऑन सिंस देन, हमारे भी बहुत तब्दीली आई है सोच में, रवैयों में, उसका शायद तर्जुमा इस वक्त हो नहीं रहा है अभी तक पॉलिसी लेवल पर, वो उसका हमें शायद जिद्दोजहद बढ़ानी होगी, उस इंतज़ार में नहीं रुक सकते हम। मगर इन्होंने एक और अहम बात की अबाउट इंट्रा माइनॉरिटी डिफरेंसेस, जो इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर और दलित सियासत की तरफ जो इशारा किया, ये बहुत अहम है क्योंकि इस पर हम अक्सर बात नहीं करते। एक आई थिंक एक वो लिबरल रिकॉयल भी होता है ना कि ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, अब हम उन पे भी उंगलियां उठाने लगे और उनके, तो आई थिंक एक हमारा भी उससे हम पीछे हट जाते हैं। हालांकि लोग इस पे काम कर रहे हैं, इन्होंने खुद किया है, यहाँ पर कहीं पे एक सूफ़ी हुसैन बैठे हुए हैं जो इस वक्त भी दलित सियासत के ऊपर अपना PhD कर रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर अरफाना मल्ला बैठी हुई हैं जो एक्चुअली वो बात करती हैं कि हमारे अंदर यानी कि जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मुस्लिम थॉट है उसके अंदर कास्ट सिस्टम किस तरह का रोल प्ले करता है। तो आई गेस वी नीड टू एम्पलीफाई दीज वॉइसेस। विद दैट आई विल गो टू शाहीन। आप थैंक यू नाजिश। आई थिंक जब हमने कायदे आज़म की लास्ट स्पीच भूल गए, व्हेन ही सेड दैट ऑल ऑफ अस आर वन एंड दैट पाकिस्तान बन गया है, नाउ वी शुड जस्ट ऑल बी पाकिस्तानीज, एंड व्हेन वी लेफ्ट कायद्स थिंकिंग and went away to Wahhabistan, that's when the decline really started. Because ये isms में हम आ गए और हम collectively आगे लड़ नहीं सके। दूसरी चीज़ ये है कि I am working by the way with rural communities and especially in रहीम यार खान, जहाँ हम भील communities को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कोई हमारे पास 10-12 गाँव हैं, लेकिन हम उनको चांस दे रहे हैं। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि हमारी जो डेवलपमेंट सेक्टर, अब सारे माशाल्लाह इतने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, मर्द ने इतने खूबसूरत नहीं पहने मगर अब सारे बड़े प्यारे लग रहे हैं। गाँव की हालात बहुत फ़र्क है और गाँव की सोच अनफॉर्चुनेटली अर्बन एलीट, अर्बन पॉलिसी मेकर्स, अर्बन फ्यूडल्स हैव फॉरगॉटन। हम कितना कर रहे हैं फॉर एनीवन हु are poor, and I agree with सोनू भाई के हमने उनका बिल्कुल नहीं सोचा जो गरीब हैं, और उससे कम जो सोचना है वो माइनॉरिटीज़ हैं जिस किस्म के हों। आई एग्री ऑल्सो कि उनकी कंट्रीब्यूशन, आई थिंक द ग्रेटेस्ट जज एवर टू बी इन द जुडिशरी वॉज जस्टिस कुर्नेलियस। उससे बेहतर इंसान तो था ही नहीं। लेकिन
हम लोग बहुत चीज़ें भूल गए हैं क्योंकि हम वी लिव फॉर द डे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकें। अभी शर्म की बात है कि सारे ये इंटेलेक्चुअल KLF है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जैसे ख़ाबर मुमताज़ वगैरह, लेकिन सोचो कि 2 डेकेड्स में सेंसस नहीं हुआ, किसी ने लिखा, किसी ने बोला, या कॉफ़ी के पीछे हम लोग चूं चूं करके बोलते हैं कि हुआ नहीं हुआ नहीं। What are the benchmarks? Who has written? Who has protested? किसी ने लेटर चलो डॉन ही को लिख दिया हो। तो हम अपने आप को अब्जॉर्व ना करें। आज जो माइनॉरिटीज़ की हाल है हम उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर भागते हैं, इधर तो हम छू छू करते हैं, भागते हैं वेस्ट को जो ज़्यादा क्रिश्चियन है। मैं कहती हूँ हिंदूज तुम्हें पसंद नहीं है, अशवीर तो पोस्टर सबके कमरों में है, तो ये हमारे में हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है। और वो इंडियन गाने हिंदू गाते हैं, अगर हर चीज़ में हम चले जाएं तो हमने खुद भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। हाउ फार कैन यू ब्लेम अ गवर्नमेंट बेचारी, जैसे है हमारे लीडर्स, जैसे आपका इधर का लीडर है, सारे ऊपर जाएं तो बेहतर ही है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि व्हाट कैन वी डू। आई मीन इट्स सो वंडरफुल ब्लेमिंग अदर्स। ग्लास टूट गया, नौकर को ब्लेम कर दिया। अगर माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ हियर, वी आर टू ब्लेम। जब तक सोसाइटी नहीं चेंज होगी गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी भी एक जेल में जहां 30 लोग होने हैं उधर 80 हैं, तो उन सबको तो पकड़ के नहीं बंद कर सकते। मगर अगर आप इस नन्हे मुन्ने उंगलियों से खत लिखें, प्रोटेस्ट इन राइटिंग, इट कैन मेक अ डिफरेंस। बेज़मीर सारे नहीं हैं। तो आज जो माइनॉरिटीज़ पर हो रहा है, आप भी सारे जिम्मेदार हैं इसके, और मैं भी, क्योंकि हम चुप हैं। वी हैव टू थिंक ऑफ अदर्स। जो कुवैत भाग गए हैं, ये दुबई भाग गए हैं, ये इंग्लैंड भाग गए हैं, उनको तो जाएं, बूढ़े होके इधर ही आएंगे। मगर वी मस्ट मेक दिस अ बेटर कंट्री फॉर ऑल। आप माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, औरतों का हाल देखें, वो भी इतना ही बुरा है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वी स्टार्ट नाउ मीनिंग बिजनेस। थैंक यू। सो जी थैंक यू। इन्होंने निशानदेही इंपॉर्टेंट चीज़ की मगर आई थिंक हमें ये भी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि इस आग में हम जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स हैं, इस आग में हम ये भी जल चुके हैं। यानी कि ब्लास्फेमी लॉ जो है, जो एक ज़माने में हम कहते थे माइनॉरिटीज़ पे लागू होता है, इस वक्त मोर सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स आर इन जेल। इट्स बिन मोबिलाइज एंड यूज्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये जो टेररिज्म की बात करते हैं हम, या जैसे इन्होंने देही इलाकों में रूरल एरियाज़ की जो रियलिटी की बात की, तो उसमें गरीब तो हर तबके का भी पैसा है, हर माइनॉरिटी का पैसा है, मगर आपके सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का भी पैसा है। तो आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें जाके जुड़ती हैं। इनकी बात सही है कि रियासत के ऊपर जब आप उंगली उठाएं, वो तो एक महदूद चीज़ होती है। आप कवानीन के हवाले से बात कर सकते हैं, हम ऑफिशियल लेवल्स की बात कर सकते हैं, मगर जो माशरे के अंदर जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, और फिर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मजहबी बुनियाद पे हो या वो तबकाती निज़ाम पे हो, वो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। और आई थिंक कभी कभी मुश्किल होता है टू सेपरेट व्हाट्स हैपनिंग टू द रेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग विद द minorities. Silence, of course, incriminates all of us, including actually some of the minorities. So with that, I'll take it over to Reema, and who's been doing her field research on mandirs and has been interacting with, I think, Hindus across Pakistan. So would you want to talk a little about your personal experiences? Before my personal experiences, I just want to say that स्टेट बहुत कुछ कंट्रोल ज़रूर करता है, मगर प्रोक्रिएशन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो 98 में अगर 3% थे, तो अब तो मेरे ख़्याल से 2 जनरेशन्स तो पैदा हो ही गई होंगी। दूसरी बात ये है कि हम माइनॉरिटीज़ को जिस तरह इतना हाईलाइट करते हैं, उस थोड़ा सा सोच के अगर हम ये देखें कि उनकी जो सोनू साहब ने भी इस पे टच किया था कि उनके अंदर जो हमें चीज़ें फ़ाइट करनी हैं, बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड कास्ट सिस्टम है, थर, नगर, इंटीरियर सिंध, और वो कास्ट सिस्टम प्लस जो उनके लिए लॉज नहीं हैं,
या बनाए नहीं जा रहे, सच एज मैरिज सर्टिफिकेट्स, द नादरा's attitude towards a lot of the Dalits and the Megwars and the Kolis. हमें उसके साथ उनका कास्ट सिस्टम इज़ नॉट हेल्पिंग द सिचुएशन. सेकेंडली जो लेजिस्लेटर्स वो चूज़ कर रहे हैं उसमें और जो उनके आम लोग हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एक बिजनेस टाइकून ब्राह्मण PMLN के मेंबर उनके नेशनल असेंबली में बैठे हैं, तो आई थिंक वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है क्योंकि ही इज़ नॉट इन टच विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन कम्युनिटी. सो आई थिंक कि उनको इस तरह एम्पावर होना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहे हैं. एक ये बहुत बड़ा इशू है और इसको थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि वो एक राइट की तरफ वो क्यों हैं और वो किस वजह से हैं उस पार्टी के साथ, उनके कौन से इंटरेस्ट हैं. मैंने अभी तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जहाँ पे उन्होंने एम्पावरमेंट की बात की हो. हमेशा मजलूमी की बात की गई है. तो मजलूमी तो शिया मेजॉरिटी के साथ जो हो रहा है और जो अहमदीज़ के साथ हो रहा है, जिन्हें घरों से निकाल के चुन चुन के मारा जा रहा है, और मेरे ख़्याल से ये हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा नहीं हुआ. मैं बिल्कुल नहीं हुआ. दूसरी बात ये है कि चाहे कराची हो से मानसेरा तक, थर, नगर पाकर, बलोचिस्तान, ऑल ऑफ सिंध, पेशावर, हर जगह जहाँ जहाँ मैं गई, जहाँ जहाँ मैंने बात की, जिन से मैंने बात की, वहाँ पे एक भी टेम्पल फेथ के बेस पे हर्ट नहीं किया गया है. IDPs आए, उन्होंने शोर मचाया, ऑब्वियसली उनको जगह चाहिए थी. टेम्पल्स की बहुत प्राइम लोकेशन है टू सेटल पीपल. दे कैन हाउस अबाउट 1,000 पीपल एट अ टाइम. एंड देन लैंड ग्रैबिंग का बहुत बड़ा इशू है, मगर फेथ के बेस पे किसी टेम्पल को हर्ट नहीं किया गया. जो जहाँ तक बात प्रोटेस्ट की आती है, आई थिंक कम्युनिटी की एम्पावरमेंट अंदर से आए वो भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, बहुत रोड्स पे मतलब एक्टिविज़म कर रहे हैं. नाजिश भी उसमें मतलब आगे रही हैं, सोनू साहब, हम सब बहुत इन सबके साथ हैं. पाकिस्तान हिंदू सेवा एक यंग पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी कम्युनिटी के लिए बेइंतहा काम करती है, और मैं पर्सनली उनके साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व्ड हूँ और मुझे पता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये दूँ कि 2014 में फोर्स्ड कन्वर्जन, विच इज़ प्राइमरीली अ क्राइम ऑफ पावर and revenge as well as barter, it's not always faith based. So forced conversions 2014 में 265 थे और 2015 में वो 14 के अंडर हैं. So I think that's a huge improvement. जब पेशावर के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि पेशावर की जो हेडलाइंस हमें मिलती हैं कि जी वहाँ पे कितनी ज़ोर से माइनॉरिटीज़ टारगेट हो रही हैं और बहुत बुरा हाल है. और कभी हमने इस चीज़ पे लिखा कि पेशावर में प्लूरलिज्म कितना डीपली एम्बेडेड है, ये हमारे खून में है. वो 10,000 साल पुराना शहर है. वहाँ पे काली की गली है. क्या कराची में काली की गली है? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा क्राइम का जोन है वो पंजाब है, क्योंकि जो क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, अगेंस्ट एंड सेक्टेरियनिज्म, women, children, domestic violence, highest figures are found there. लाहौर was a place जहाँ पे 1000 के करीब एक ज़माने में मंदिर होते थे. हर तकरीबन हर बस स्टेशन जो था वो इट वाज नेम्ड आफ्टर अ मंदिर, जैन मंदिर या नीला गुंबद मंदिर. अब वहाँ मुश्किल से 2 मंदिर रह गए और
जो माइनॉरिटीज़ हैं, they are living under the biggest burden I think that a human being can face, which is the burden of false identity. वहाँ पे वो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, वो हमारी सीट ऑफ पावर है सपोजिडली, और वो वहाँ पे अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं. कोई अपने आप को पतरस जॉर्ज बताता है तो कुछ एम्बिग्यूटी अपने बारे में पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर वो खुल के ये नहीं कहते कि जी हम हिंदू हैं या हम क्रिश्चियन हैं, या एक कुछ एम्बिग्यूअस रहने की कोशिश करते हैं. और ये पंजाब, लाहौर, वो शहर जिसने इतने एरर्स देखे, इतनी रूल्स देखे, वो अपनी ही तारीख मिटा रहा है और उसको रीराइट कर रहा है. और जहाँ तक, और मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया मगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. एक और पॉइंट उठाया गया कि बहुत सारे लोग भाग गए, 3% बच गए. जो पाकिस्तान में हुआ है पिछले 35 साल में, मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदू भागे हैं. कितने मुसलमान भागे हैं? जब आपके कल्चर को, थिएटर को, क्लासिकल आर्ट्स को, लिखने को, पोएट्री को मार दिया जाएगा, तो फैज़ साहब से लेके नाहिद सिद्दीकी तक कौन नहीं भागा? किसी को नहीं भगाया गया. तो क्या हम हर वक्त माइनॉरिटीज़ पीटते रहेंगे? कितने लोग भागे? So it's not just the minorities. We lost huge giants to those dark years, and इतना brain drain हुआ है, इतनी mass migration हुई है. तो मेरे ख्याल से एक और बात कि जहाँ तक empowerment की बात आती है, if I just talk about the Hindu community, तो लास्ट मार्च में फॉर द फर्स्ट टाइम सिंध में कुछ टेम्पल्स ने, 4-5 टेम्पल्स में अटैक्स हुए थे. अटैक्स इन द सेंस के दे ट्राइड टू इन्फ्यूज़ फियर सो दैट दे कुड यूज अप द लैंड फॉर शॉपिंग मॉल्स और IDPs एंड ऑल दैट. तो जो PPP, MQM, सिंध की पार्टीज़, जमात इस्लामी, वो हिंदू बिरादरी के साथ मिल के उन्होंने दे ब्रॉट Sindh from Hyderabad to Sakkar to a grinding halt for 3 days. And I think कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से और किसी मुल्क में हो नहीं सकता. तो कोई कुछ भी कहे, ये हुआ है. और वो वक्त भी था जब क्रिश्चियन चर्च पे पेशावर में मैस के दौरान अटैक हुआ और ह्यूमन चेन मुसलमानों ने बनाई 3 दिन तक. बस ओके, थैंक यू. एक मिनट जी, we'll first go to him, and I think रीमा ने जो एक इम्पोर्टेंट बात की, मैं आपको बताना चाहूँ. जब मैं स्वात में मैं पिछले 15 साल से 10 साल से काम कर रही हूँ. तो ये जब तालिबान 2009 में फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जब तालिबान वहाँ से हटाए गए थे, मैं जाके वहाँ पे जो एक स्वात में मिगोरा शहर में जो एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ पे मैं औरतों से बात कर रही थी. तो वो औरतें मुझे कह रही थी कि हर इतवार को ये तालिबान आते थे हमारे दरवाजे पे, कहते थे बुर्का पहनो और चर्च जाओ. तो वो उनका एक अलग वो था कि यू नो दे यूज्ड टू फोर्स अस टू गो टू चर्च, और कहते थे तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग जाओ, इतवार का दिन है, चर्च जाओ. मगर कमिंग बैक टू व्हाट रीमा सेड, I think it's important to also kind of focus on minorities symbolically. कि अंग्रेज़ी में जो एक कहावत है, canaries in the coal mine, कि जब वो कोल माइन, जब वो कोयले के माइंस में होते थे तो वहाँ पर वो चिड़ियाएँ रखते थे, और जब ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाता था चिड़ियाएँ मर जाती थी पहले. तो इसलिए उन्हें पता चलता था अच्छा प्रॉब्लम होने वाला है, तो फिर लोग जो होते थे निकलने लगते थे जब चिड़िया मर जाती थी. तो मकसद कहने का ये है, आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, क्योंकि जो चीज़ वो पहले कैच करते हैं, जो उन्हें पहले इम्पैक्ट करती है, वो आगे जाके पूरे माशरे को फिर वही लहर जलाती भी है. सो विद दैट आई विल ask John O'Brien to say whatever he wants to say, since I don't know what it is. सबसे पहले सबको सलाम.
मुझे नहीं पता था कि मुझे उर्दू ज़बान में बोलना पड़ेगा. नहीं नहीं, आप कोई भी ज़बान में बोलें, आप कोई भी ज़बान में बोलें. Speak in English. So मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा, दोनों ज़बानों में इस्तेमाल करूँगा. Muhammad Ali Jinnah was a Shia. His wife was a Parsi. His daughter married a Christian in All Saints Church in Bombay. The Speaker of the First Assembly of Pakistan was a Hindu. Its first foreign minister was an Ahmadi. And the music of the national anthem was written by a Christian. We seem to have regressed a long way. So what happened? The people who struggled for Pakistan wanted a Muslim homeland. They didn't want an Islamic state. But as soon as Pakistan was established, the Muslim religious parties started to compete with each other as to who would provide the ideology of the state. Because as soon as you say it's an Islamic state, the next question is, well, which version of Shariat are we going to follow? And if you read the Munir report after the Ahmadi massacres of 1953, you're all very well acquainted with the decision of the judges that there is no such thing as Shariat. There's as many Shariats as there are law schools. Okay, but here's the point. How did these groups compete with each other for the high moral ground? They did so by targeting minorities. First the Hindus, then the Ahmadis, then the Christians, and now the Shias. And after that they'll target the Brelvis, and after that they'll fight among themselves. And after that it will be like Syria now. So there's a competition going on, there's a struggle going on for the Pakistani narrative. Who says what Pakistan is? And the only people who have the right to say what Pakistan is are all the people of Pakistan. Often I officiate at a Christian marriage. And generally speaking, I take an interest in the newly married couple. And when the first child is born, I make a point of visiting them. And the second and the third child comes along. And the parents are so full of hope. They're so full of hope for their children and their children's future. 10, 15 years later, the hope has been kicked out of them. Because the Christian mother is locked in a grid of 4 or 5 or 6 interlocking oppressions. There's the oppression of poverty because all the resources of the country are going to the military and not to development. There's the oppression of caste because despite the protestation that the Qur'ani Sharif does not recognize caste is ever present in the manner in which we think about people and speak about people and behave towards people. And the Christian community is still constructed as a particular oppressed caste. They're not constructed as Pakistanis. The Christian community is Dravidian, ethnically speaking. And they are oppressed for that reason too, because the country is obsessed with ये गंदमनी किस्म की लड़की है नहीं ऐसे लड़की से शादी से रिश्ता नहीं करेंगे. People are obsessed with this kind of thinking. Just on that point, it's worth pointing out that the people from whom the Christian minority are descended, as indeed the Hindu minority, they are the original inhabitants of this land. They were here before 1947. They were here before the Ingres, they were here before the Mughals, they were here before Maharaja Ranjit Singh, they were even here before the Arya. They are the true original people of this land. They have a right to be here. They do not need anybody's permission
or anybody's meherbani. It is their land and has always been their land. And then they are constructed as dhimmis. I go into an office, whether a police officer or a civil officer, I'm making the case for some man whose daughter has been abducted by the Munshi of Avadero or whatever. And then very solemnly the officer says to me, ab log dhimmi hai, ye hamare farz hai ki hum ab logon ki hifazat karenge. And he's saying this with great solemnity, and I'm supposed to believe him. Of course, I cannot disagree, because if I disagree, I will win the argument, but I can't get anything done for the person who has been abducted. But this idea of dhimmi, of being protected, well, first of all, the minorities, as well as a great deal of poor Muslim people, they're not being protected. If I were to give you a list of all the atrocities committed against Christians, I will keep you here till 3 o'clock. And after each atrocity, there is this noble-sounding apology and a promise of compensation and an assurance that this will never happen again, until it happens again 6 months later. But besides that, Christians are not looking for protection. They're looking for equality. In a true democracy, we would not need to protect our minorities. Our society would not be based on violence. It would not be a society of jiski lati, uski bans. So, forget about protection. Give the minorities equality before the law and equality before a just law. And speaking of laws, I would be sadly remiss if I did not mention the blasphemy laws. Now, how many rich Sunni Muslims have been charged and convicted under the blasphemy law? If you study the people who are charged and convicted and imprisoned and whose lives are threatened and who are sometimes assassinated under this law, you'll find they're always people from the minorities, or if they're from the majority community, they are always poor people, always. If you study the statistics, given that the minorities form about 2.5–3% of the population, and if you study the number of people against whom blasphemy charges have been made, the chances of a blasphemy charge being made against a member of the majority community is 15-1. In relative terms, minority people are 15 times more likely to be charged with this crime than people from the majority community. Therefore, this law has nothing to do with justice. Nothing. Moreover, all the people who are Moreover, when you examine the cases deeply, you discover, oh, the principal of this school is a Christian. ये नहीं हो सकता है कि एक हो सकता है कि इनमें से एक principal बन जा सकता है नहीं तो गुस्ताखी रसूल. Or in another place, a man has a tractor. He's a Christian. How can he have a tractor? And then the caste narrative is introduced. He belongs to this caste. He comes from that group. They're supposed to be nichile log. They should be happy just to clean the streets. How can they be allowed to have a tractor? All the cases are about jealousy, rivalry, and revenge. In no single case, in not even one single case, has it ever been proved that a member of the minority willingly and knowingly defiled the Quran Sharif. Not even in one case. You might say in the case of Asiya Bibi, it has been proved because she confessed to the crime. How did she confess to the crime? She confessed to the crime by having her thumbprint put on a piece of paper which she could not read because she's illiterate, and moreover, she was denied
a lawyer on that occasion. I don't know whether that's agreement or disagreement. Thank you. Are you? J, okay. Bolo Asia Bibi ki? All right. I'll just make two very brief points. One has already been made. It's now part of the national narrative, and properly so, correctly so, and I agree, that the massacre of those school children in Peshawar was a game changer, and rightly so. But simply 8 or 9 months earlier, an equivalent number of people were massacred in the church in Peshawar. Why? Both of them are atrocities, both of them are horrible, both of them are awful. But one is more important than the other, and why? The last thing I would say, and I'm saying this on behalf of many, many Christians, हम ईसाई नहीं, हम मसीही हैं. You know, in the 19th century, there was a debate between Orientalist and Eastern scholars. And the Eastern scholars said, please stop calling us Mohammedans, we're Muslims. So the Oriental scholar said, well, look, if they say they're Muslims, then they're Muslims. We must use the word that they use. So there was a shift. Maybe there can be a shift in this country too. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, thank you, John O'Brien. We can come across, he's spoken about many cases, we can come across many other cases where we do have, people belonging in the majority. As we speak, Junaid Hafiz is on the death row he's a Fulbright scholar, and he was a lecturer at Bahauddin Zakaria University. And like John O'Brien rightly pointed out, it's always another case. It's always something else that needs to get resolved through it. And yes, but like I said, it's something else that gets resolved through it. So we have many other such examples, and I think it's an important thing to zone in on, that there's always another politics. So the blasphemy law is always invoked when there's something else at play, whether it's land issues, whether it's property issues, whatever it is. And I think it's important to kind of contextualize that. Now, before I just open up, I just want to point out the commonality. Every speaker spoke about the early days of Pakistan, the first few decades, what kind of a syncretic or more inclusive culture there was at that time. And Rima spoke about, for instance, Punjab, and why there's a particular coalescing of such acts over there. I think it's important at some point to revisit history as to what actually happened during partition and what happened before that. I think we need our history to explain our future. And it's because of the build-up that influence what happened later on, and I think every speaker has kind of spoken about that. We will not have time to come back to the speakers for, if we open it up to questions, we can't come back to the speakers to answer them. So what I will do is, instead of asking you to ask questions, is to just make comments that don't need the speakers to respond. Is that okay? All right. So there's someone jumping off his chair, and we can start with him, and then we'll come to you. Yeah. Yeah, I think most of the problem is stemming from the fact that we have not conceptualized Pakistan properly. I mean, we need to draw the line between having a separate state for Muslims as a community and having an Islamic state. The Islamic Republic of Pakistan is causing a lot of problems, because then you become obsessed with religion as an identity and the very basis for statehood. What that automatically does is it excludes everyone else out of the fold. And like Rima pointed out, not just minorities, then you have the question of what's the right Islam, what's the wrong Islam, and then Shias and Ahmadis are also, they get targeted because of this. So I think we need to reconceptualize and refashion and perhaps have just Pakistan and not Islamic Republic of Pakistan.
Thank you. Yes, please. The mic will come to you up front. एक मिनट, I'll come to you. इनके बाद इनको दे दीजिएगा, please. This is a subject I've written a lot about. I do write about Please the put it nearer. persecution of. Yes. My name is Meher and I'm a columnist for different newspapers in Pakistan, and I write a lot on the religious persecution of non-Muslims. Number one, I don't like to use the word minorities for anybody who lives in Pakistan. I think they are all Pakistanis. I think the problem began when the flag was colored, when we actually made people aware of what their religious identity was. I think that's where the problem began. And in a country where there's a minorities day, I don't think anything is ever going to change. We have actually made it obvious to people who have lived here for centuries that no, this is not your country, and we're doing you a favor by letting you stay here. I agree with whatever he said. They don't want equality. They don't want protection. They need to be made. They need to be made citizens of Pakistan. That's about Okay. it. Can I ask you all to please keep your comments brief? There are many people who want to talk, so just please brief. जी here. इनको दे दें, please. Okay. The floor. डॉक्टर जयपाल छाबड़िया, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हिंदू फोरम। एक तो ये जो झंडा है हमारा बनाया गया फ्लैग, दैट कंसिस्ट वाइट स्ट्रिप, एक डंडा भी हमारे तरफ रखा गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे ऊपर डंडा है कि मैं पाकिस्तान का सिटीजन होते हुए हिंदू वजीर आजम या सदर नहीं बन सकता। और दूसरा ये, हमारे मुल्क में अभी तक ये नहीं बताया जाता, कुछ चीज़ें आप लोगों ने बताई, लेकिन पहली जो रिजोल्यूशन पंजाब असेंबली में थी, वो क्रिश्चियन 3 वोट नहीं देते। SP सिंघा जो स्पीकर था, अगर वो वोट नहीं देता तो वहाँ रिजोल्यूशन भी पास नहीं हो रही थी। और दूसरा, नहीं 2-3 नहीं, बहुत सारे हाथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, आपने जो जोगेंद्र नाथ मंडल का बताया, वो ओनली स्पीकर नहीं था, लॉ मिनिस्टर भी था, लेबर मिनिस्टर भी था, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी था। और ये इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान नहीं बना था, जो आज बोलते हैं तमाम मजहबी तंजीमों ने, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, खाकसार तहरीक ने मुखालफत की थी इस पाकिस्तान की, और जोगेंद्र नाथ मंडल ने, SP सिंघा ने हिमायत की। Hello, my name is Akash Kumar Chawla and I belong to minority also. तो मेरा क्वेश्चन है रीमा अब्बासी मैम से। क्वेश्चन नहीं, there's no time for her to respond. आप अलग से बात कर लें इनसे, आप कमेंट कर लें। कमेंट यही है कि हो सकता है कि आपके मुताबिक फोर्स कन्वर्जन कम हुई हो, और ये भी हो सकता है कि आज तक जिसने भी मज़हब चेंज किया हो उसने मुतासिर होकर किया हो। मेरे नज़रिए मुताबिक ऐसा कोई केस आया नहीं है, मगर किसी ने मुतासिर होकर किया हो, तो ये क्यों ज़रूरत होती है कि उसे वाइफ ही बनाना पड़ता है उन्हें? आप बहन बनाकर भी तो घर में रख सकते हैं उसे। उससे शादी ही क्यों करनी होती है? आप बहन बनाइए, आप बेटी बनाइए। नहीं, ये अभी नहीं, अभी बात है। पीछे खातून है जिनके दोनों हाथ उठे हुए हैं, जिनके बहुत सारे और भी हाथ हैं, आप इंतजार कर लीजिए। दीदी पीछे बहुत हाथ हैं, आते हम देर तक बैठे रहते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आज़म महराज है। मेरे जो मिनॉरिटीज़ के लिए और वुमेन और सेकुलर और लिबरल काजेज़ के लिए काम करते हैं, उन लोगों से एक इल्तिजा है कि ये जब आप उनसे, जिन लोगों ने 1906 में मुस्लिम लीग बनाई कि हम मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत चाहते हैं, 40 साल उनको एक मंत्रा पढ़ाया गया कि हम एक ऐसी रियासत चाहते हैं जहां मुसलमान आज़ादी से रहेंगे। जब हम उनसे इख्तलाफ शुरू कर लेते हैं तो वो भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। इससे कहीं बेहतर नहीं कि उनको बताएं जी आपने ठीक है अपनी कब्रें छोड़ी, अजदाद की लैंड छोड़ी, मज़हब के नाम पे छोड़ी, और आप हज़रत उमर वाले बच्चों के नाम रख के सिर्फ मुसलमान हो गए, ये काफ़ी नहीं है। इंसाफ भी दें, जब इंसाफ होगा मुसलमान को मिलेगा तो वो हिंदू को भी मिलेगा, मसीही को भी मिलेगा। और दूसरा जो जब आप मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो मिनॉरिटीज़ को
जब हम रोज़ यही मंत्रा बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये ज्यादती, उनकी अचीवमेंट बताएं तो उनके अंदर भी प्राइड पैदा हो। आपको पता है कि इस जंग में प्लीज स्टॉप, देखें आप हाथ कितने हैं, आप एक पॉइंट कर लें प्लीज, 1 पॉइंट प्लीज। आप जो मुझे कह रहे हैं आप ये गिने यहाँ पे हाथ कितने हैं जी, आप बताइए। आप यहाँ पे ले आए माइक प्लीज, वहाँ पे एक दे दें, उनको करने दें, फिर यहाँ पे ले आइए। मैं आपके कर रही हूँ, आप हाथ गिनिए जी। आप मुझे कह रहे हैं आप यहाँ पे हाथ गिन लें। बस जी एक मेरा रीमा जी से एक कमेंट है। कमेंट वो ये है कि आपने कहा कि कौन नहीं भाग रहा, तो मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहती हूँ कि बाकी फैज़ से लेकर नाहिद सिद्दीकी तक आप मान लें कि वो भी माइनॉरिटी है, इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी हो सकती है, आर्टिस्टिक माइनॉरिटी हो सकती है, लेकिन वो माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी टारगेट पे है। ये वो वाइट स्ट्रिप वाली माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन वो जो हमारे हरे झंडे की माइनॉरिटी है वो भी इसी तरह टारगेटेड है। लेकिन ये रिलीजियस माइनॉरिटी इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी अपने आप को वल्नरेबल सिटीजन समझते हैं। अदरवाइज बाकी जो हम माइनॉरिटीज़ हैं, सिटीजनशिप के हवाले से हम इक्वली ट्रीट होते हैं बाकी रिलीजियस। थैंक यू। ये आगे ले आए प्लीज इनके पास, इधर प्लीज यहाँ पे ले आए। जी 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 जी। I just wanted to say that constitutionally we have passed things which are unconstitutional. My mother was in the constitution. She was the only one who said, no, we should have anybody who has merit who should become a head of state. That she lost. Two other leaders of our country did not allow us to have Ahmadis, and they passed them once. Mr. Bhutto said they were minority, and then after that, the seal was put by Ziaul Haq. These are people who had power. That's all. Thank you. इनको दे दें please before he jumps off his. जी मैं इसके बाद इनको दे दीजिएगा please. In my college, one of my friend told me that once you recite Pehla Kalma, you will be Muslim. Then surprisingly I told him, I narrated a story that when I was in one class and I used to recite Pehla Kalma Tayyib Tayyib Mane La ilaha illallah Ya Muhammad Rasulullah daily in my school, and the same day when I go to my home, I was used to recite Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. But still I am the same personality with the same faith in my heart, but the problem is it's in the mind, mentality. Absolutely. इधर go. मेरा नाम अमरनाथ मोटूमल है, मैं हिंदू पंचायत कराची डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ। बातें बहुत हुई हैं, हर बात का जवाब देने के लिए हमारे पास मवाद है, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप वाइट स्ट्रिप की बात करते हैं। वाइट स्ट्रिप धुल चुका है जब आपने दुश्मन को दूसरा नाम हिंदू का दे दिया। आपने पड़ोसी मुल्क को हिंदू कह के करार दे दिया, आपने वो वाइट पोर्शन धो दिया। हम हिंदू पाकिस्तान में बहुत एक पाकिस्तान की सरजमीन को अपनी मां की गोद समझते हैं। इसने हमें पाला है, इसने हमें पोसा है, इसने हमें अच्छा खाने को दिया है, अच्छा पहनने को दिया है। लेकिन आपकी इस रवैश ने, जिसके जरिए आपने दुश्मन को दूसरा नाम हिंदू का दे दिया, हमें डरने के, एहतसाल करने के, हर बात को गिरफ्त में करने के लिए आपने पाबंद कर लिया। आप जाइए बाहर किसी गली में किसी हिंदू को रोकिए, उससे पूछिए तुम कौन हो, वो आपको जवाब देगा कि मैं नॉन मुस्लिम हूं। आप उससे पूछेंगे क्या मतलब नॉन मुस्लिम का, वो आपको जवाब नहीं देगा, आपको देखता रहेगा। आप जब खुद उसको कहेंगे क्या तुम हिंदू हो, तब वो गर्दन हिला के हाँ करेगा, लेकिन मुंह से हाँ नहीं करेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। जी नहीं, पीछे खातून जो आयल पे बैठी हुई हैं जी, उसके बाद आप आ जाइएगा। हाँ, उनको दे दें जो पीछे खड़ी हुई हैं।
मेरा नाम आमना मवाज है और मेरा ताल्लुक अवामी वर्कर्स पार्टी से है और अभी जो इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस इन इस्लामाबाद वी आर द फर्स्ट पार्टी where our chairperson candidate was a woman and a Christian, and I stood below her just to make this a point that firstly the narrative of the state, if in the places where minorities are not minorities like Kailash, like Nagar Parkar, please explain to me why are there army cantonments and Jamaatul Dawa madrasas side by side? Why aren't we talking about it? Thank you. Thank you. ये अब आप इनको दे दें. And also one last point is please just keep it to one point, please. That Pakistan is the only country where the majority ran away. Yes, Bangladesh. Thank you. इनको can I just take two last questions? ये जो आगे aisle पे बैठे हुए हैं, आप खड़े हो जाएं. हाँ. इनको दे दें. And then आगे and then that's it. I'm sorry we can't do more. ये क्या बोल रहे हैं? क्या करूँ? जी इनको दे दीजिए प्लीज माइक, ये जो आगे बैठे हैं. मुझे नहीं है बोलने का, मैं नहीं बोल सकता. नहीं मुझे कोई एतराज नहीं. आपने तय किया है तो फिर बता दें. नहीं आप मैं बोलिए. ओब्रायन साहब की ज़्यादातर बातों को अप्रिशिएट करते हुए एक इजाफा करना चाहता हूँ कि हम यहाँ अप्रेस्ड और मार्जिनलाइज लोगों के हुकूक के लिए बात करते हैं, लेकिन जब हम उनको माइनॉरिटीज़ कह के मुखातिब करते हैं तो हम खुद उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं. तो ये मैं लिखने वाले बोलने वालों से गुजारिश करूंगा कि माइनॉरिटीज़ के कह के उनको मुखातिब न करें. जब आपने तय किया कि एक मेजॉरिटी है एक माइनॉरिटी है तो इक्वल राइट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के इक्वल नहीं हो सकती. एग्जैक्टली. तो फिर सवाल, कुछ दोस्त कहते हैं कि फिर हमें क्या मुतालबा, क्या कहना चाहिए. हमें कहना ये चाहिए बजाय इसके कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें ये कहना चाहिए कि मजहबी तफरीक के बगैर तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए. एग्जैक्टली. मैं क्या करूं? अच्छा. You know, these people have had their hands. Let me say. No, sorry. Allow me. Sorry. You know, I've been raising hands since half an hour, and I'll take my rights because this guy spoke without permission. It's actually not fair. No, I'll do that. I lived in many cities of the world: London, New York, Toronto, Karachi, and I learned one thing: human beings have the rights. There is no religion. I went to synagogue, church. I'm a Muslim, but I believe in humanity, and that is the religion of all the prophets, and even in Hinduism. So I rather say promote humanity than promoting who is Muslim, Hindu. That's the religion of the, rather I call myself global citizen. You go and see my Facebook, I say I am not Pakistani, I am not American, though I have a dual passport. I am global. I mean, this is a violation of my rights. This is minority. People not willing to listen. And you are choosing not knowing who raised the hand first. Thank you very much. Finish करें. Nazish. These two have had their hands. Others have to come. अच्छा चलें. Okay जी, I'm being told कि ये हॉल खाली करना है दूसरे सेशन के लिए. So I'm very apologetic. I will come and speak to those people. I'm sorry about that.